बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन ऑफ लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट इंजरीज, द इंजरीज दैट आर कॉज्ड टू द डिफरेंट जॉइंट्स दैट आर मीन द जॉइंट इंजरीज। जॉइंट इंजरीज क्या होती है? देयर आर सो मेनी फ्रैक्चर्स जो होते हैं, फ्रैक्चर्स आर अमंग द बोन्स, बट if the fracture happens, if there is an injury happens near a joint, that will be called the joint injuries. Joint injuries में the common injury among the joint injuries is dislocation, means the dislocation of the joint. Simply dislocation किसको बोलते हैं? It's injury of a joint, but जो if there is a attachment, if the two bones are joined, अगर दो bones joined है, when they displaced from their original position, if in a joint, एक joint में क्या होती है? There are two bones connected. The two bones are connected makes a joint. जब joint dislocation हो जाती है, dislocation is a part of bone. Dislocation means when the two bones that are located in a joint are displaced from their original position. जब जो दो bones connect होंगे एक के साथ, means a joint. The joint is made up of with the connection of more than one bone. Means when there is a connection of two bones, that will be called the joint. If there is a dislocation, if among these two bones, yeah, both these bones are displaced from their original position, that will be called the dislocation. It may be associated with a sprain or a fracture. Sometimes it may be, अगर sprain होगा, मसल के ऊपर push होगा, it may be the damage of ligament. अगर ligament damage होएगी तो उससे भी right left चला जा सकता है हमारा bone, या sometimes it may be fracture, bone टूट जाएगी, उससे भी right left चलाया जाएगा from its joint part. Simply dislocation, main cause जो होता है dislocation का वो यही होता है कि if there is a direct or indirect impact over the joint. Sometimes it may be simple dislocation, sometimes it may be complicated dislocation, sometimes it may be the fracture dislocation. Deformity may arise. Sometimes it may be deferred. We did not move. We will feel pain. We will feel swellings. These things will be common. These will be symptoms. But simply इसमें क्या हो जाता है? We should give it proper treatment. अगर हम proper treatment नहीं हो, then there will be a deformity there will be a deformity for a long period of time. It may be till death. Sometimes dislocation क्या होती है? It's common among the throwers. जो throwers होते हैं उनका जो dislocation होता है shoulder dislocation common होता है. Sometimes we may prevent it by strengthening much more by getting much more strength of our muscle, या properly warm up नहीं हम करते हैं, या control range of movement में नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा jerk देते हैं. These things can cause the dislocation of a bone. Dislocation means when the bone is displaced from their original position. Simply ये कहाँ पे हो जाता है? Dislocation कहाँ पे हो जाता है? जहाँ पे एक joint होते हैं and the joint is enclosed by the ligaments, cartilage जो होता है. Sometimes एक direct blow से, या sometimes it may be by jerk, या sometimes by throwing anything that causes the dislocation. Means the bone is displaced from its original place. ये से displace हो जाती है, दूर हो जाती है. What is the treatment steps to look after the dislocation? इसमें क्या होता है? First to immobilize the joint and patient should be kept in a comfortable position. पहले immobilize करें, means we have to minimize the movement we have to restrict the movement of the joint. वो पहला होता है. दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि we have to apply the cold and ice therapy, cold compression या ice therapy to reduce the pain and internal bleeding जो होती है. We have to provide the support to the injured part. उसके ऊपर कुछ bandage लगाना है, crack bandage like that, like elastic, something like that should be tied between this कि वो उसे further movement नहीं. Patient should be handled by an expert doctor. उसका एक्सरे करना चाहिए, डिजिटल एक्सरे, समथिंग देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डायग्नोज एंड प्रॉपर आइडिया होना चाहिए. उसे क्या होना चाहिए कि वी मस्ट यूज इट immobility. We should use the plaster
टू मिनिमाइज द मूवमेंट। फिर हमें प्लास्टर भी इस पे ऊपर करना चाहिए। वी शुड यूज प्लास्टर टू enable the joint to make its to real position. First we have to take it to the real position to have its original place. तो फिर उसको क्या प्लास्टर कराना है। प्लास्टर से क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो जाएगा। आफ्टर द इमोबिलिटी शुड बी, मतलब इट शुड बी अप टू 1 month एंड नियर अबाउट 1 महीने के लिए हमें मूवमेंट नहीं करना। आफ्टर फुल ट्रीटमेंट हमें क्या करना होगा, डिसलोकेशन जो उसकी प्रोग्रेस देखनी होगी, उसको फिर रिहेबिलिटेट एक्टिविटीज करना है। To gain the strength, something like that, we have to make the rehabilitation treatment. मतलब प्लास्टर करना है, एक्सरे करना है, कोल्ड थेरेपी देनी है।